Let's start with October November 2018 variance 42. State the name of the apparatus shown. बेटा A जो है वो आपके पास बीकर है और B जो है वो आपका मेजरिंग सिलेंडर है. Measuring cylinder. A student uses the apparatus shown for two electrolysis experiment. कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, कैथोड एनोड है, बैटरी है. वो कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड. वो कह रहे हैं आपसे ब्रोमीन रिलीज हुई है. तो ऑब्जर्वेशन एट एनोड. ऑरेंज या फिर रेड ब्राउन वेपर्स. ठीक है. हाइड्रोजन गैस. उसके बाद है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस कॉपर टू क्लोराइड. तो क्लोरीन एट प्रोडक्ट या क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर रिलीज हो रही है बेटा. सो येलो ग्रीन. कॉपर है तो पिंक ब्राउन सॉलिड. Give a test and observation to identify chlorine gas combined with litmus paper. Litmus paper. Bleaches. Turn to colorless. जब ब्लीच हो जाता है तो कलरलेस हो जाता है. सही है. ओ या व्हाइट. कलरलेस नहीं, कलरलेस की टर्म सॉल्यूशन के लिए होती है. टर्न टू व्हाइट. यू आर राइट. नहीं, ऑफ व्हाइट नहीं तो बेटा व्हाइट हो जाता है. वेल, क्वेश्चन नंबर 3. कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये इक्वेशन आ गई. A student investigates how the rate of this reaction changes as temperature increases. The rate of reaction, temperature increases. The student carries out 5 experiments, each at different temperature. For each experiment, he reacts a fixed mass of a small piece of calcium carbonate, fixed mass of calcium carbonate, and excess of dilute hydrochloric acid. He measures the time taken for all the calcium carbonate to react. State one variable other than concentration of the hydrochloric acid and the temperature that is likely to affect the rate of this reaction. Concentration. Surface area भी कह सकते हैं. सही है. सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? पार्टिकल साइज. ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है टर्म, पार्टिकल साइज. The student is asked to control the temperature of each experiment so that it remains constant for the whole time that the calcium carbonate and dilute hydrochloric acid are reacting. ये मेथड दिया हुआ है इन्होंने. इस मेथड में कह रहे हैं measure out the suitable volume of dilute hydrochloric acid and pour into a beaker. The thermometer in the acid. Heat the acid with a Bunsen burner. Stop heating when required temperature is reached. Add a weight sample of calcium carbonate to the acid. Start the clock. Stop the clock when calcium carbonate has reacted. Record the reaction time. This method does not keep the reaction mixture at constant temperature throughout the experiment. Explain why. क्योंकि जो आपका बीकर होगा उसके टॉप से हीट रिलीज हो जाएगी. तो हीट लॉस from the top of beaker suggest how the method can be improved so that the reaction mixture is at constant temperature throughout the experiment. तो बेटा आप thermostatically controlled water bath यूज कर सकते हो.
Next, C part. Which experiment has an anomalous reaction time? Three. Third, बेटा ज्यादा था, कम हुआ, फिर कम होना चाहिए था, फिर ज्यादा हो गया। जब ज्यादा से कम हो रहा है, बीच में ज्यादा नहीं हो सकता। What can a student do to check if the result is anomalous? नहीं, आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। Repeat the experiment. How does the rate of reaction change as reaction time decreases? अगर reaction time decrease हो रहा है तो इसका मतलब rate of reaction increase हो रहा है। Rate of reaction increases, ठीक है। उसके बाद है which of the 5 experiment has the greatest rate of reaction? बेटा जिसका reaction time सबसे कम है उसका rate of reaction सबसे ज्यादा है, तो experiment 5। Describe how the rate of reaction changes with temperature of the acid. Temperature of the acid है, तो temperature increase करोगे तो rate of reaction भी increase होगा। Rate of reaction increases as temperature increases. Another student does the reaction at 80 degrees Celsius. Why it would be difficult to measure the reaction time accurately at this temperature? Exactly, reaction time 2 seconds से भी कम होगा, which is very difficult to measure. So reaction time is less than 2 seconds. And it is difficult to measure. Okay, next. A student is provided with 3 bottles. One contained dilute hydrochloric acid. Guys, alert रहना. One contained dilute hydrochloric acid, another contained aqueous sodium sulfide, and third contained aqueous sodium sulfate. The student provided with magnesium ribbon, aqueous barium nitrate, and dilute nitric acid, but no other chemicals. The student has access to all the apparatus normally found in a school and college laboratory. For each of the 3 bottles, describe a test and its positive result to identify the content of the bottle. Chemical equations are not required. That's a very, very smart question. तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम HCl लेंगे और HCl को हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, मैग्नीशियम रिबन। तो आप बताएंगे मैग्नीशियम ribbon dissolves because of gas is given off. सही ना बेटे। उसके बाद है आपके पास सोडियम सल्फाइड, add nitric acid,
and then gently warm pungent gas is given off. Sulfur dioxide is given off. इसके बाद है आपके पास सोडियम सल्फेट. तो आप सोडियम सल्फेट के लिए क्या ऐड करेंगे? ऐड बेरियम नाइट्रेट, white precipitates are formed. सही है? Question number 5. A student determine the percentage of iron in a powdered sample of impure iron by titration method. The student adds the sample of impure iron to previously weighed beaker, which is then reweighed. Mass of beaker plus impure iron, mass of beaker. बेटा दोनों को अगर मैं subtract कर लूं, 39.36 minus 37.52 is going to be how much? हाँ जी, 1.84. वो कह रहे हैं in excess of dilute sulfuric acid is added to the beaker containing impure iron. The sulfuric acid reacts with the iron. ठीक है, ये equation important है. The impurities do not react or dissolve in the sulfuric acid. What is mean by in excess of dilute sulfuric acid? Excess dilute sulfuric acid use किया जा रहा है so that make sure किया जाए कि सारा का सारा iron use हो जाए. Iron has been used up. This needs to be made sure. Say, the student suggests that the beaker should be heated to make the iron react faster. What safety precautions should be taken when heating the beaker? Explain your answers. Gloves, safety goggles, why? Because sulfuric acid is corrosive. सांस में नहीं जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी करके करें. सही, ऐसा नहीं करते हैं. नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. Sulfuric acid is corrosive. डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व कर देता है अंडर हीट. ये देख रहे हैं आप, अंडर हीट हो रहा है ये सारा का सारा प्रोसेस. What else could the student do to increase the rate of reaction in the beaker? कंसंट्रेशन बढ़ा दे HCl की, है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दो. Should increase इसके अलावा एक और भी काम कर सकते हैं. मिक्सचर को स्टर कर लो. स्टर द मिक्सचर. क्यों कर रहा हूं स्टर मिक्सचर को? फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट. जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. Suggest a method of separation the insoluble impurities from the aqueous solution. Filtration. Suggest how the student should ensure that all the solution is transferred into the volumetric flask. नहीं बेटा, वो तो सही है, लेकिन हमें ये करना है.
एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। ऑल्सो watch the content of the beaker. ये लिखा हुआ ना all the solution, ये important है। उसके बाद है आपके पास the student transfer 25 cm cube of P into the conical flask using a pipette. Solution Q is 0.02 mole per dm cube potassium magnate 7. The student fills a burette with Q, यानी burette के अंदर KMnO4 है, याद रखिएगा, और conical flask के अंदर P है। ठीक है, चलें। तो सबसे पहला है 0.0, उसकी 1 2 3 4 5 6 25.6। उसके बाद सेकंड है आपके पास 3.5 और 28.2, फिर है 11.4, 36.3। चलिए डिफरेंस बताइए। 25.6, 28.2 minus 3.5 becomes 24.7। और इसको करेंगे बेटा, बेस्ट हाइड्रोजन रिजल्ट्स ये तो होंगे। Using these results, the average volume of Q is 24.8 cm3। याद रखना ये 24.8 cm3 है, राइट। आगे यूज करेगा एग्जामिनर। Give 2 reasons why the student does 3 titrations using 25 cm3 of P in each rather than carrying out 1 titration using this। एक्यूरेसी के अलावा और क्या होता है? नहीं, परसेंटेज एरर कम हो जाता है बेटा मल्टीपल रीडिंग्स लेने से। मल्टीपल रीडिंग्स reduces the percentage error, यानी एक्यूरेसी की तरफ चले जाता है। और फेयर कंपैरिजन भी तो होता है। फेयर कंपैरिजन नहीं, एक और भी लिख सकते हो। देखो इधर देखो, ये P कितना लिया हुआ है उसने? 250। और तुम्हारे पास P है कहाँ? कॉनिकल फ्लास्क में। तो कॉनिकल फ्लास्क में अगर 250 cm3 सिर्फ P ले रहे हो, तो जो ब्यूरेट से आएगा वो कहाँ जाएगा? तो वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ये भी लिख सकते हो 250 cm3 of P is too much volume। Calculate the number of moles of potassium magnate 7 in the average volume of potassium magnate 7। तो बेटा आपके पास 1000 cm3 है, उसमें 0.0200 मोल्स हैं, एवरेज वॉल्यूम 24.8 cm3 है। बताइए कितना होगा? 8 cm3 है ना? हाँ, चलें 24.8 cm3 बताइए कितना होगा? 4.96 into 10 to the power minus 4। 1 mole of potassium magnate 7 reacts with 5 moles of Fe2+।
MnO4 नेगेटिव और Fe2 प्लस 1:5 का रेशो। अगर ये आपने 4.96 into 10 to the power -4 लिया है तो बताइए मोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास Fe2 प्लस आइंस के? 4.48 2.48 into 10 to the power -3। ये मोल्स कितने वॉल्यूम में? 22-25 cm क्यूब में। लिख लो ये बात, क्योंकि जब ये लिखोगे तो आगे कनेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस इन 250। तो भाई 25 में आपने कितने निकाले थे? जरूरी है, जरूरी है बेटा। 250 cm क्यूब में कितने होंगे? 2.48 into 10 to the power -2, राइट? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन इन 250 cm क्यूब। आयरन का AR दिया हुआ है 56। तो मास ऑफ आयरन निकालने के लिए मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 56 से, तो बताओ कितना मास आएगा? 138.88। क्या बोले भाई? 1.3888 ग्राम। ठीक है, यूज योर आंसर टू A and H, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 1.3888 और आप कितना किया था? 1.4 75.4%। तो हम यहाँ लिख देते हैं 75.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Solidel is a mixture of two compounds. The compounds each contain a different cation but the same anion. Different cation है, same anion है। Complete the table. Any gases given off should be named and identified by a suitable test and observation. सही है जी। तो वो कह रहे हैं a colorless solution is formed। तो बताइए L does not contain transition element। फिर वो कह रहे हैं to the first part aqueous sodium hydroxide is added until a change is seen aluminum calcium zinc। तो आप बोलिए white precipitates। फिर वो कह रहे हैं excess aqueous NaOH यूज कर रहे हैं, तो आप बोलिए precipitates dissolve। Precipitates are soluble giving colorless solution। फिर वो कह रहे हैं L contain ammonium ions और आपने मिक्सचर को वार्म किया है, तो आप लिखेंगे अमोनिया गैस इज गिवन ऑफ which turn red witness blue। To the second part, aqueous ammonia is added until a change is seen। L may contain aluminum or zinc ions, तो बेटा आप कहेंगे white precipitates। और precipitates का PPT लिख रहा हूँ, आपने पूरा वर्ड लिखना है, ठीक है, पेपर में जी। तो बेटा मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। An excess of aqueous ammonia is added to the mixture from 1. L contains zinc ions, precipitates dissolves giving colorless solution। वो कह रहे हैं आपसे L contain chloride ion, तो आप लिखिए एट एक मिनट
Do the third part. Nitric acid, add nitric acid followed by सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब क्लोराइड आयंस होते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। सही है। नेक्स्ट, the reaction between aqueous lead-2 nitrate and aqueous potassium iodide produces a precipitate of lead-2 iodide. ये equation आ गई। A student has two solutions. G is an aqueous solution of potassium iodide of unknown concentration. H is 1 mole per dm cube lead-2 nitrate. The student determines the concentration of G by adding different volume of H to 4 cm cube of G in a test tube. In each case, she allows the precipitate to settle and then measure and record the height of the precipitate. The diagram and table shows the result. The student uses a burette to measure the volume of G and H. Why does the student uses a burette? To get the accurate results. तो आप कह दीजिए burette has more accuracy. Then measuring cylinder. Why did the student stop at 12 centimeter cube of H and not carry out further measurement using 14 cm cube and 16 cm cube of H? Because height was constant. ठीक है। Plot the results from the table of the grid to draw the two intersecting lines through the points. ठीक है। Use your graph to determine the height of the precipitate if 3.5 centimeter cube of H is equal to 4 cm cube of G. 3.5 cm cube of H. तो 3.5 के ऊपर कितना आएगा? तकरीबन तो हाइट ऑफ द प्रेसिपिटेट कितना हो रहा है? 12 13 हो रहा है। यार देख लेना प्लीज। ये है ना, ये 13 हो रहा है पूरा बेटा। 13 ये है ना। Oh, sorry, 3.5 यार आप देख लीजिएगा ना बेटा, मुझे वैसे नजर नहीं आ रहा। बेटा मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मजे आ रहे हैं। आगे चलें। The volume of H that should be added to 4 cm cube of G to produce a precipitate which is 20 millimeter in height. 20 millimeter height के ऊपर precipitate जो है ये है 20 millimeter height और ये आ रहा है तकरीबन ये पक्का 5.8 बस सही है। जो दिख रहा है वो लिख देते हैं बेटा।
ठीक है, the minimum volume of H that reacts completely with 4 C cube of G. क्वेश्चन है, ई पार्ट करते हैं पहले. H is 1 mole per dm cube lead nitrate. Use your answer to do D3 and the equation. Calculate the concentration of potassium iodide. The minimum volume of H that reacts completely with 4 cm cube of G. सर जी तो इसके अंदर नहीं रिएक्शन कर रहा है बेटा. नहीं, 1 मिनट रुक जाइए. यहाँ कितना वॉल्यूम है? ठीक है, हाँ. नहीं, जी है बेटा. G ये है ना बेटा. G is an aqueous solution of potassium iodide of unknown concentration. एक assume value ले लेते हैं. चलो 8 ले लेते हैं. सही है. अगला क्वेश्चन करके देखते हैं. हाँ, मसला नहीं है. इससे चेक करो. चैट. H is 1 mole per dm cube lead to nitrate. Use your answer to D3 and the equation. Calculate the concentration of potassium iodide. एक मिनट बेटा. H 1 mole per dm. देखिए बेटा, 1000 cm cube में आपके पास 1.0 moles of lead to nitrate है. और आपने पार्ट थर्ड में मैंने कितना वॉल्यूम एज्यूम किया हुआ है? 8 cm cube. 8 cm cube में बताओ कितने मोल्स होंगे? वो मुझे भी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. आंसर चाहिए 0.008. सही है, यही है. ओके. अच्छा, लेड नाइट्रेट है आपके पास और पोटेशियम आयोडाइड है. 1:2 का रेशियो है. अगर ये 0.008 है तो बताइए ये कितना होगा? -2. सही है. अजीब सा बताया है. अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड कितना वॉल्यूम था आपके पास? 4 cm क्यूब. तो 4 cm क्यूब में आपके पास मोल्स कितने हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻² मोल्स. कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर कर लूं. आंसर बताओ. हाँ, कोई इशू नहीं है, आप बता दीजिए. अबे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता दो. फोर मोल पर dm. Makes sense. सही है.